Okay, so let's go for uncertainty. Uh, Before going to uncertainty relation, let's go for mainly uh, one problem, which was the homework for last class. So, what was the potential? The potential is basically given by, I think, if I am not wrong, that will be kx to the power 4, isn't it? This was the potential. And we just want to know how my energy E is proportional to n to the power alpha, then we have to calculate the value of alpha, isn't it? And n is just a quantum number, you can say. And we have to use basically Bohr-Sommerfeld theory. Okay. So when you are going to plot Vx, then what is your Vx? Your Vx is equal to basically kx to the power 4. So when we are going to plot Vx, this will be something like this, isn't it? So this will be also mainly parabolic in nature, but that is not actually parabola. The shape is parabolic. This is symmetric about y-axis. So this is our Vx versus x. And if we are going to plot the basically the phase curve and momentum versus position, then this will be almost elliptical in nature, but not exactly ellipse, isn't it? ऐसा होगा ना? Because if you will write the expression of energy, what will be expression of energy? That is your px square upon 2m plus we have kx to the power 4. So now you can just see that this is also bounded in nature. You can just see this can be written as px square by 2m and kx square to the power square. So this x can be positive and negative, both can be possible. And here you can have this particular momentum. So if x is equal to 0, we have px, and this value is equal to what? Root under 2me. Everyone is comfortable? And this value is what? Minus root under 2me. And what is this value? When px is equal to 0, then x is equal to what? E by k, isn't it? Sorry. When px is equal to 0, then what is this value? E upon k to the power 1 by 4. And this value is nothing but minus E upon k to the power 1 by 4. So this is our in general shape of this particular phase curve, or the shape of phase curve between if I am talking about phase curve, that means I am talking about position and momentum. And what we have to do, we have to figure out this particular integration, and this integration is nothing but px into dx, and that is approximately is equal to nh. Yes, that value is n into h according to Bohr-Sommerfeld theory. So again, what we will do, if we can integrate from and this is nothing but the area under the curve, isn't it? This is nothing but what? Area under the curve. So if somehow we can find the area from here in first quadrant and we can multiply it by 4, then easily we can get the answer. Are you people comfortable? Yes, sir. Hannah? So we can get this particular area, and how we are getting this particular area. So we have, and what is value of px? The value of px is basically, so from here you can find the value of px, and that value is equal to 2m e minus k x to the power 4 root under. Everyone is comfortable? Yes. And we have to calculate this particular integration, and this integration is 2m, and you have e minus kx to the power 4 root under dx, and that is equal to nh. Now I can write this integration as 4 times 0 to, and what is the value of this? Is maximum value of x, and which is also known as amplitude. The maximum value is what? Amplitude. So if we have this particular value, then what we will get? We will get basically
क्या है ये वैल्यू? E upon k to the power 1/4 and inside this integration 2m e minus kx to the power 4 dx is equal to nh. यहां तक तो लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था, याद है आपको, है ना? रिमेंबर ऑल दिस कैलकुलेशन? Yes, sir. यस. नाउ व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? अब आगे आगे बताओ क्या क्या करना होगा. व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? Sir, 2ME को बाहर निकालो. वेरी गुड. रूट अंडर 2m को बाहर निकालेंगे, है ना? Yes, sir. So first we will just take 4 into root under 2me outside. Okay. And what you will get? You will get 0 to e upon k to the power 1/4 and you have 1 minus k by e x to the power 4 dx. क्लियर है ये? यहां तक तो ठीक है ना? एंड नाउ जरा आप मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है. मुझे इस इंटीग्रेशन को एनर्जी के इंडिपेंडेंट बनाना है. व्हाट आई शुड डू? Sir, अपर लिमिट को बाहर आना चाहिए. अपर लिमिट को बाहर ले लेंगे. तो कैसे लेंगे? इसके लिए कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना? Sir, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? K व्हाट यू विल सब्स्टिट्यूट? यू विल सब्स्टिट्यूट k अपॉन e टू द पावर 1/4 into x is equal to what? t. ऐसा पुट कर सकते क्या? बाकी बच्चे भी जवाब देंगे. ऐसा पुट कर सकते क्या? Yes. यस. अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. अगर x की वैल्यू e अपॉन k टू द पावर 1/4 पुट करा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. सो हमने चीजों को इस तरह से ऐसा कर लिया कि जो हमारे काम की चीज थी वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? सिर्फ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना? सो दिस इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू मेक द थिंग डायमेंशनलेस. ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ काम आएगा आपको, है ना? e अपॉन k टू द पावर 1/4 एंड नाउ इसे भी बाहर ले लिया और अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट 0 to 1 रूट अंडर 1 minus t to the power 4 dt and this value is equal to what? nh. नाउ क्या मैं बिना इंटीग्रेशन के बता सकता हूं दिस वैल्यू इज सम फ्रैक्शन? बताइए, बता सकते हैं या नहीं? बता सकते हैं. कैसे बता सकते हैं? जस्ट चेक आउट. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज इक्वल टू e अपॉन k टू द पावर 1/4. दिस इज योर px, दिस इज योर x एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस वैल्यू? रूट अंडर 2me. अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसका एरिया क्या होता? Sir, रूट अंडर 2me इंटू e बाई k टू द पावर 1/4, है ना? Yes. If this would be rectangle, then this area will be this, and this should be 1, isn't it? Yes. है ना? लेकिन ये रेक्टेंगल तो नहीं है, उससे छोटा एरिया है, उससे बड़ा एरिया है. छोटा है. छोटा एरिया है तो छोटा एरिया होने का मतलब दिस वैल्यू इज व्हाट? सम फ्रैक्शन. Okay, this value is some fraction. So obviously you can put some constant here because हमें proportionality के term में answer देना है. So we have to use the term in a term of proportionality. Then what we will get? We will get e to the power. So from here, m is constant, k is constant, nothing to do with this constant. We have to figure out what is the relationship between e and n. So e to the power 1/2 plus 1/4 is proportional to n. And what is this value? E to the power 3/4 na is proportional to n. So e is proportional to n to the power 4/3. Yes. So e is proportional to n to the power 4/3. Are you people comfortable now? Everyone?
Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से करोगे, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी much more weighted into JEST examination and TIFR examination, because JAM में आएगा तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का आएगा या पार्टिकल इन बॉक्स के लिए आएगा, बट यू शुड बी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है? ओके, चलो. Okay, sir. Okay, so let's go for uncertainty principle. Next half an hour is very interesting, and this is not a challenge to student कि आप समझ पाते हो कि नहीं. This is actually challenge to a faculty, to a teacher कि आपको uncertainty principle वो समझा पाता है या नहीं, है ना? So let's see what is this uncertainty relationship and what is uncertainty principle, and this thing will change the whole approach of calculation, whole approach of analysis in a microscopic level, and this is basically fundamental of your quantum mechanics. Okay, so this is all about your approach of quantum mechanics. ठीक है ना? So, by the way, I am 100% sure that you people know something about uncertainty principle. So let us start the whatever the knowledge you have about the uncertainty principle. So कोई बता सकता है what do you know about uncertainty principle? क्या जानते हो uncertainty principle के बारे में? जो भी जानते हो you can tell us, है ना? The position and the velocity of an object cannot be found out at same time. Very good. So Momentum. position and the velocity. So this is very vague word. Okay. So now if I am trying to ask you some question, is that can I find position and momentum of y direction simultaneously? Yes. Yes or no? Conjugate. Sir, No, sir. conjugate variables. Very good. So what is important? Important is the conjugate variable. Are you getting my point? It is not about position and momentum. It is all about two conjugate variables. What is conjugate variable? What is mathematics behind that? That is different issue. But in a very raw form, what you can say that your position and its conjugate momentum. Are you getting my point? Your position and its conjugate momentum cannot be measured simultaneously. In a Newton's law, what will happen? In a Newton's law, you can measure position and its conjugate momentum simultaneously. Are you getting my point? Yes. For example, for a harmonic oscillator, so if I am talking about harmonic oscillator, then what is harmonic oscillator in a classical nature? mx double dot plus kx is equal to 0. है ना पता ये तो बहुत fundamental है. और omega square x, or you can write x dot plus omega square x is equal to 0. This is all about harmonic equation of motion of harmonic oscillator, and I can get x is equal to sum a cos omega t. Then I can also calculate at the same time x dot with a full of confidence that this is a omega sin omega t with the minus sign, isn't it? And you can give the guarantee that yes, if this is my position at the time t, this will be my velocity, and obviously velocity and momentum are the same thing. So if I can take mass is equal to 1 unit, then I can talk about the velocity. Okay, but yes, you are comfortable with the momentum, then you can easily say px is nothing but minus m a omega sine omega t. And in a classical mechanics, what we can do, we can measure the position and momentum precisely. Are you getting my point? We can measure the momentum and position precisely. But at the microscopic level, when I am going to change this particular mass to a electron, then what I will find, I will, and leave the charge, I am not interested into charge right now.
I am interested into size of a particle. It is microscopic particle, and this harmonic oscillator, if I have this harmonic oscillator where mass is at subatomic level or the atomic level, then what we have, we are going to see that we are not precisely going to measure the position and the momentum. Now my question is that what is meaning of precisely measurement of position and momentum? If you can give this answer, then only we can understand the what is actually uncertainty principle. So now let's try to give me answer. What is meaning of precisely measurement of पोजीशन एंड मोमेंटम? सर जितने एक्यूरेसी से हम लोग पोजीशन मेजर करेंगे उतनी ही मतलब वो डिटेक्ट आ जाएगा उसमें मोमेंटम मेजर करने में. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्यूरेसी हियर? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई. एक बार में एक आपको पोजीशन मिलेगा, एक बार में आपको एक मोमेंटम मिलेगा, isn't it? Yes, sir. So what is meaning of accuracy here? This is very interesting. सेम टाइम पे हाँ, तो मतलब जब हम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो अगर t = 1 सेकंड पे कर रहे हैं, हाँ, एग्जैक्ट उसी टाइम पे हम दोनों का कैलकुलेट कर पाए. नहीं टाइम डिफरेंस नहीं, देखो, दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल एरर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो एरर है, वो एरर कौन सी एरर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This error is all about statistical error. What is meaning of that statistical error? Try to understand in a very careful, in a very sensible form. Look at here. Suppose what will happen classically and what will happen what will happen quantum mechanically. Actually, I can have no other choice to use this word. But what will happen classically? Let us try to give you answer. Suppose I just want to measure what is my position at t is equal to t naught and what is my momentum at t is equal to t naught. If I am going to measure the classical approach with the help of Newtonian mechanics, then what is my position? The position is a cos omega t naught, and let's say that value is x naught, and my momentum is basically px m a omega sine omega t naught with the negative sign, and let's say this value is p naught. If you are going to measure, do this experiment again and again. Look at this, is very sensible. If you want to do this experiment again and again, and if you want to measure what is the position at x is equal to x naught and what is the momentum at x is equal to x naught, you will get the precise value, and that precise value is equal to what? X naught and p naught. First measurement, here you will get x naught, here you will get p naught. Again, after some time, again you will start your measurement, and the same particular point of time, again you will get x naught or p naught. X naught or p naught. If I am going to do this experiment again and again, what you will get? You have 100% guarantee that your particle will land at x naught with the momentum p naught. Are you getting my point? Yes, sir. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? What I am going to say, that suppose I am going to plot a intensity versus position at time t is equal to t naught, and this is intensity. If I am talking about intensity, means I am talking about how many times you are getting position. You are getting position is equal to x naught at time t is equal to t naught. You are giving the 100% guarantee, isn't it? Means either your particle is at x is equal to x naught, or your particle is not anywhere. It is, you are just giving the 100% guarantee. I am talking about intensity. Or you can do this experiment in another way. You will take the same set of harmonic oscillator, and you have 100 of harmonic oscillator, and you will throw this particular harmonic oscillator,
then all the 100 harmonic oscillator will be at x is equal to x naught at t is equal to t naught, and same time we have this 100% guarantee that their momentum is also p naught. Are you getting my point? So if you have 100% guarantee that your particle will be at the x is equal to x naught, and its momentum is p is equal to p naught actually. So I think this is much better, है ना? So this will be at p is equal to p naught. Then obviously there is not any error involved into measurement. Are you getting my point? Yes, sir. So what will happen when I will replace this mass to the very subatomic particle, and we are just going to approach the quantum mechanical thing, then this is going to happen. If I want to make a precise measurement on position, if I want, and this is my intensity, if I want to get the precise measurement on position, then what I have a very broad distribution for the p naught, for p. Are you getting my point? So here is error. It can be, if you want to make precise measurement for this, it may be p naught, it may be 2 p naught, it may be 3 p naught, it may be 4 p naught, it may be something else. And if you want to make the precise measurement of this p naught, then what will happen? Your particle will either x naught, either 2x naught, either 3x naught, and this kind of thing is there. So what will happen? These two things will go in a very opposite direction. If we want to measure position precisely, we are just getting momentum have lot of error. And if we want to go for momentum precisely, then what you are getting? You are getting position has lot of error. And that error will be constrained by the uncertainty principle given by the great Heisenberg. And this uncertainty principle will tell you all about the statistical error. Means you are doing the thing again and again and again. And if you want to probe your particle at x is equal to x naught, then you have lot of error into p in the momentum space. And if you want to precise the momentum of a particle, then you have lot of error in a configuration space or position part. So because these two things are basically attached to each other by the Fourier transformation. I am not going into very detail of Fourier transformation right now, but you can see that we have this kind of situation. So what is the constraint? The constraint is that we have delta x into delta px is basically, or we can write precisely, must be greater than h cut by 2. If we have error into delta x and we are going to measure the error into delta px, this will be greater than h cut by 2, or for calculation purpose, the minimum error can have order of h cut. Means if this delta, and what is this delta x and delta px? ये क्या है ये? error. Small change in position and momentum. What is this? Sorry, क्या बोल रहे हो? Small change in position and momentum. No, this is not a small change in position and momentum. This is basically a statistical error, Error. standard deviation. Are you getting my point? Yes, This is sir. all about standard deviation. What is a standard deviation? The standard deviation is nothing, or error is nothing. Delta x is nothing but average value of x square minus average of x whole square, and delta px is nothing but we have average of x square, average of px and average of px square. So this is a statistical error. Are you getting my point? Yes, sir. This is a statistical error. What is meaning of that? When we are going for the phase curve, then we have a very nice thing we can assume up to this limit. क्या अभी तक समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ? सर ये जो फार्मूला लिखी है तो ये क्या मतलब statistical फॉर्मूला है सर? Sorry, क्या बोल रहे हो?
सर ये जो फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच कट बाई 2, यही ना? नहीं सर, नीचे नीचे ये फॉर्मूला लिखा है सर। ये वाला ये हाँ ये सर। हाँ बताओ। सर ये कैसे है सर? ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं जब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करूंगा देन आई विल डिस्कस दिस थिंग। एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो एक्स का और एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो एक्स स्क्वायर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सर। है ना? उसका दोनों का एवरेज वैल्यू निकालने के बाद आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ओके सर। सो स्टैटिस्टिकल एरर का मतलब क्या हुआ? आप बार बार उस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, बार बार उस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। यहां पर आप देखोगे दैट एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर और एवरेज ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विल बी सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस थिंग? Yes, So, sir. we are repeating this experiment again and again. We are repeating this experiment again and again. And if we are going to focus on position part, then momentum part have a lot of error. Now, you can see here, if I want that this should be precise, means this delta. And what is a standard deviation? A standard deviation is nothing but the measurement of dispersion. Are you getting my point? Yes, sir. Measurement of dispersion. Dispersion means how much your data is deviated from the mean point. Are you getting my point? जो Yes, sir. एवरेज वैल्यू से डेटा आपका कितना डेविएटेड है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। यहां पर क्या मीन पोजीशन से आपका डेटा डेविएटेड है क्या? नहीं सर। नहीं, मीन No, sir. पोजीशन ही वही पॉइंट आ जाएगा आपका, क्योंकि हर एक बार आपको सेम ही आपको पोजीशन और सेम ही मोमेंटम मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय मतलब- पॉइंट? मतलब डेल एक्स और डेल पी एक्स आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। हाँ, बोथ आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली, दे आर एरर इनटू मेजरमेंट। ओके, Yes, sir. ठीक है? ओके, so this is the thing you have to work out in your mind. So please, the people have lot of confusion what is delta x and what is delta px. These are Sir. the error, and these error are the statistical error. Now look at this all thing from a phase curve. Phase curve के point Sir. of view से, हाँ बताओ। ये डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ये एच कट जो एक कांस्टेंट है ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा ये एरर। That will be some constant value, but that will be always greater than h cut by 2. It may be 2h cut, it may be 3h cut, okay? But that will not equal to 0. पर हम Are you getting my कैलकुलेशन के लिए तो एच कट ले रहे हैं ना। हाँ, h cut ले रहे हैं। Okay. That is minimum uncertainty. Sorry, this is for the minimum uncertainty. Your uncertainty can be more than that. Okay? ओके सर। ओके, देखो मैं समझा रहा हूं आपको क्या है, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करो। एंड इट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स को इतना बोरिंग बना देते हैं कि उसके अंदर की ब्यूटी ही खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट बोरिंग, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग टू योर सिस्टम। नाउ अब आप देखो, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमने फेज कर्व प्लॉट किया था, रिमेंबर है ना? Yes, sir. और उसका फेज कर्व हमने ऐसा प्लॉट किया था, ठीक है? नाउ अब एक जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था? फेज पॉइंट कहा था, रिमेंबर? यस? Yes, sir. नाउ व्हाट विल बी द एरिया अंडर दिस फेज पॉइंट? 0। भाई पॉइंट का एरिया क्या होगा? Yes, sir. 0. 0. So why you can measure this position and momentum precisely? You can say this position is px1 and this momentum is this position is x1 and this momentum is px1. If you are going to repeat this experiment again and again at some point of time, t is equal to t0, और हमने यहां पर p0 और या x0 दिया था, है ना? Are you getting my point? t is equal to t0 पर हर बार आपको यही पॉइंट मिल रहा है। Are you getting my point? So what will happen? So your area will be, area under the point is 0. That is the beauty of classical mechanics. So you can give with a 100% guarantee that your position and momentum is equal to have the same have
precisely measurable. Now, if I will say that your area will be have to be greater than some particular value, then what will happen? सर वो उसमें प्रिसाइसली पॉइंट नहीं कर Obviously, अगर मैं कहूं कि ये एरिया ग्रेटर देन किसी और वैल्यू से होगा, then you have to denote your area something like this. होगा कि नहीं? This will be delta x and this will be delta px. Yes या no? अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप फेज कर्व पर स्मॉलेस्ट एरिया क्या बना सकते हो? कट बाय 2 सॉरी, h h cut by 2, isn't it? This delta x and this delta px. Now, why we are taking delta x into delta px? Because it may be possible that at t is equal to t naught, first time you are getting x here and px here. Second time you are getting x here and px here. Third time you are getting x here and px here. Fourth time you are getting x here and px here. Even if you are measuring the thing in a very precise manner. Are you getting my point? यस सर सो Yes, जो sir. भी डेविएशन होगा, सपोज दिस इज योर मीन पॉइंट, ये जो आपका मीन पॉइंट है, इससे आपकी चीजें डेविएट होंगी, यस या नो? सो आपका जो मिनिमम एरिया है फेज कर्व में, आप क्या बना सकते हो? सो दिस इज गिवन बाय, you can make the minimum area is, you cannot make phase area delta x into delta px, this should be greater than h cut by 2. So the concept of phase point is vanish here, है ना? एक फेज पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, and you have this sort of information with yourself. Are you getting my point? सर क्वांटम मैकेनिकली फेस डायग्राम नहीं बना सकते फिर हम? Obviously नहीं बना सकते हैं, it is very difficult, है ना? क्वांटम मैकेनिकली, इसी कारण आप जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो वहां आप you will take the unit delta x into delta px is the unit cell and that will be order of h cut. आप पूरा एरिया को उससे डिवाइड कर देते हो तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट मिल जाता है ना? Yes, आप sir. देखोगे ये चीज आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में करोगे, ओके? अब जैसे मैं पूछूं कि इसके अंदर कितने स्टेट पॉसिबल हैं, अगर मिनिमम इतना बड़ा एरिया हो सकता है, तो आप क्या करोगे? पूरा एरिया निकाल कर इसे डिवाइड कर दोगे, यस या नो? यस सर है ना? सो यू हैव ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट. सो दिस थिंग इज यूज्ड इन अ वेरी, बट मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूं. द मेन मुद्दा ये है कि अगर मैं डेल्टा एक्स को प्रिसाइज करने की कोशिश करूंगा तो डेल्टा पीएक्स में एरर ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा. डेल्टा पीएक्स को प्रिसाइज करूंगा तो डेल्टा एक्स में एरर ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा. इसके थ्रू आप एक एक्सपेरिमेंट भी देखते हो, ओके? एंड यू कैन जस्ट गो फॉर द यंग डबल, सॉरी नॉट डबल स्लिट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. मैं आपको आज एक वीडियो भी शेयर करूंगा, दैट इज वेरी नाइस वीडियो इन अ लैब, जिसके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट देखा गया. सो लेट्स डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट. डिस्कस करें क्या? ओके Yes. ओके, चलो. सो आप जरा सोचो इसको, फिर हम लोग थोड़ा टाइम और देंगे, और जब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करूंगा तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे क्या हो रहा है. ओके ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू सिंक इन, समय लगेगा सिंक करने के लिए. सो डोंट ट्राई टू मग अप द थिंग, है ना? याद करने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू थिंक कि भाई एक एक्सपेरिमेंट को मैं बार बार कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना? तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है अगर एरर आता है तो ऑब्वियसली एक्स और पीएक्स की अलग अलग वैल्यू आते रहेगी हर बार, है ना? और एक को जहां आप फिक्स करने की कोशिश करते हो, दूसरा बहुत ज्यादा आपका एरर दिखा रहा है. ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नाउ लेट अस गो फॉर अ एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसका एक वीडियो लिंक भी भेजूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास, या फिर
इस क्लास के बाद मेरी एक और क्लास है तो उसके बाद मैं भेजूंगा, सो आप देखना किस तरह से चीजों को समझाया जा सकता है, बट वी विल कैलकुलेट ऑल दिस थिंग हियर। तो सपोज करो ये एक सिंगल स्लिट है और ये हमारा स्क्रीन है एंड दिस इज वाइडली ओपन, ये काफी ज्यादा ओपन है। व्हाट यू विल सी, यू विल हैव सम स्पॉट हियर, है ना? आप क्या देखोगे, एक स्पॉट यहां पर देखोगे, जस्ट लेजर लाइट से जा रहा है, सपोज ग्रीन लाइट इज गिवन टू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, you will see one spot, and this is sufficiently big, okay, sufficiently big that laser light can come here. Now look at what will happen as you are just going to shrink this space. इस स्पेस को आप क्या कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो, कम करने की कोशिश कर रहे हो। होना क्या चाहिए, ये स्पॉट और छोटा होना चाहिए था ना? लॉजिकली क्या होना चाहिए, क्लासिकली और छोटा होना चाहिए ये स्पॉट। But what you will feel, you will find as we are going to shrink it, as you are going to shrink it, and suddenly what you will get? You will get a something very weird distribution pattern, isn't it? And your light will be go from here to here. Light आपका क्या चला जाएगा, ऊपर और नीचे, यहां से यहां तक चला जा रहा है। So that means what is meaning of that? मैं x को प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, isn't it? I am just trying to precise x. I just want to compress my photon here. मैं अपने फोटोन को यहां कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, such that it should go straight. But what will happen here? It has enough momentum that it can go up to this limit and it can go up to this limit. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. So now you can use the Young double slit experiment and as well as de Broglie hypothesis, and you can prove that this delta x and delta px is what, greater than or approximately is equal to h cut. So let us try to calculate this particular thing, है ना? And suppose we are doing this thing with the electron. So don't worry, we are doing this thing with the electron. अभी तो मैंने laser light का बताया था आपको example. So suppose you will just pass from electron and it will also give you the diffraction pattern. And we have seen this thing into Davison-Germer effect. That's yes, electrons can also give the distribution pattern. Okay. But what is the meaning of distribution pattern? कैसे दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन आकर कैसे से चला गया होगा, क्या कैसे मिला होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न? इंटरफेरेंस हो रहा है ना, क्या एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ? नहीं सर, मतलब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो नहीं, दिस इज सिंगल स्लिट। क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, डोंट वरी। पहली बार इलेक्ट्रॉन आया होगा यहाँ, एंड यू आर डूइंग दिस थिंग इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर पीरियड ऑफ टाइम में आप इसे देख रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन आया होगा यहाँ, फिर दूसरा यहाँ आया होगा, फिर तीसरा यहाँ आया होगा, फिर चौथा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, छठा यहाँ आ गया, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ आ गया, 11वां यहाँ आ गया। मैक्सिमम यहाँ आ रहे हैं, कुछ यहाँ भी 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 आ रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. You are doing this experiment again and again. One electron, फिर से इलेक्ट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉन, and after some time what you will get, okay, some intensity is here, but suddenly zero is here, some more intensity is here, some more intensity is here, and at the center we have maximum intensity, and again this intensity, and again this sort of intensity is here. Intensity means number of electron, that's it. Okay? And it will just resemble to this particular distribution curve or this particular diffraction pattern of the light. सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। सर ये एक इलेक्ट्रॉन से बार बार किया जा रहा है ना? या तो आप एक इलेक्ट्रॉन से बार बार कर रहे हो, yes, something like this, yes. Yes sir. तो इसका जो स्नैप, we are talking about identical electron, okay? But obviously ऐसा नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के फिर से ले जा रहे हैं। You are just sending the stream of electrons continuously, okay? You have electron gun, लगा करके छोड़ दो, और एक दिन दो दिन बाद आकर के देख रहे हैं क्या हो रहा है। Are you getting my point? Yes sir. And then we are saying, okay, over period of time,
we have this sort of distribution. This is very exciting, isn't it? कैसे हो रहा है भाई, यही यहां क्यों नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल इस तरह का मैथमेटिक्स को कैसे फॉलो कर रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कि लाइट को तो इंटरफेरेंस के थ्रू आप समझ लेते हो, isn't it? Y is equal to y1 plus y2 and you have this this interference pattern. But what is happening here? This is somehow here is that every electron has some group velocity and they are made up with different, they are associated with different wave, and they are just going to make the interference pattern, and something can be here. Okay, now इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं. Okay, so obviously this distance is delta x and we are just going for the first maxima. So n is equal to 1. So this angle is basically theta. So from the experiment, you know, delta x is equal to delta x sine theta is equal to n lambda. If d will be this thing, then delta x sine theta is equal to n lambda. You remember this thing from the diffraction, hai na? So what is delta x? Delta x is equal to, and for the first minima, so n is equal to 1. So delta x is equal to lambda upon sine theta. Okay, and now this has particular momentum. So this is angle theta. So what will be this distance? So what will be this momentum part? P sine theta. Hoga na? And what will be this part of momentum? This will also what? P sine theta. Isn't it? This distance and this distance. Okay, something like this. You have this sort of pattern here. So what will be the dispersion part of the momentum? What is the change in momentum in a x direction? This is my x direction. Okay, because I am changing this thing into x direction. So what will be this value? Change in momentum in a x direction is equal to what? 2p sine theta. Yes, yes or no? Yes, and this momentum is actually classical momentum. So I can write from the de Broglie hypothesis that this p is equal to h upon lambda sine theta. Hoga na? And now Yes, let us sir. try to calculate delta x into delta px is equal to lambda upon sine theta into 2h by lambda into sine theta. Then this lambda, this sine theta is cancel out, and you will get delta x into delta px is equal to 2 times h. So this will be the uncertainty you can have for the electron if you are doing this experiment with the electron. Are you people happy? And obviously this is greater than h cut by 2, isn't it? Yes, sir. This is greater than h by 2 pi. Sorry, h by 4 pi, isn't it? Yes, sir. So you can have this sort of uncertainty into this particular problem. Different problem, you have different type of uncertainty. Okay. So this is a first part of uncertainty principle, and obviously I have to take some more time for this. So most probably tomorrow or day after tomorrow we can have one more class where we will do some more problem on using the uncertainty principle. Okay, so आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ because I have next class also. So if you have any doubt, I have 2 or 3 minutes with you. I am 2 and 3 minutes with you. Okay. सर एक डाउट था. हाँ बताओ. सर वो जो ग्राफ आपने स्टार्टिंग में बनाया था जिसमें हमें पता लग रहा था कि x की वैल्यू और मोमेंटम की वैल्यूज कैसी आ रही हैं, तो उसमें हमने x की वैल्यू फिक्स करी थी. ध्रुवी तो थोड़ा तेज बोलो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली. सर जो आपने ग्राफ बनाया था उसमें हमने x की वैल्यू फिक्स करी थी और मोमेंटम की ग्राफ में वैल्यूज चेंज हो रही थी. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो x है हमारा उसमें कोई स्टैटिस्टिकल एरर नहीं आ रहा है. तो हम उसको x डॉट
del px लिखकर करेंगे ना? हाँ, नहीं देखो, एक्चुअली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर x का भी डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा। ओके, दिस इज इंटेंसिटी वर्सेज x। एंड अगर आप p का भी डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, सो दिस विल बी p and this will be also something like this. Okay, now if you want to make it precise, अगर आप इसको precise करना चाहोगे तो ये broad होता जाएगा। Are you getting my point? और अगर आप इसे प्रिसाइज करना चाहोगे तो ये ब्रॉड होता जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दैट विल बी 100% प्रिसाइज। दैट मीन्स इसे क्या होना पड़ेगा, ये अगर 100% प्रिसाइज होगा, सपोज दिस इज 100% प्रिसाइज, दैट मीन्स इट हैज टू बी फ्लैट, इजंट इट? तो फिर अगर ये इसकी एरर 0 है तो इसकी एरर क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। यस सर, है ना? आ गया। समझ रहे हो ये? Yes, sir. सो ये मैं जस्ट थ्योरेटिकल आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं विथ हेल्प ऑफ टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। हेंस द राइट हैंड साइड हैज सम कांस्टेंट वैल्यू, सम मिनिमम वैल्यू, देन इफ यू आर गोइंग टू मेक इट प्रिसाइज, देन sorry, delta px into delta x. So if you are going to make it precise, then it has lot of error, and if you want to make it precise, then it has lot of error. But ultimately every system have some delta x into some delta px, and that value will be always greater than h cut by 2. Are you getting my point? Yes, sir. जैसे और एक सर ये हमने- सिस्टम हमने लिया, इस सिस्टम का एरर कितना आ रहा है, दैट इज 2h कट, 2h एक्चुअली। ओके, Yes, वैसा ही तुम कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका कुछ और एरर आएगा। वैसा ही तुम कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका कुछ और एरर आएगा। यस, यस सर। ओके। और सर बस एक चीज और, हमने हम्म। ये ग्राफ इंटेंसिटी के साथ क्यों करा? क्या बोल रहे हो, सॉरी? सर ये इंटेंसिटी है ना वाई एक्सिस पे? इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी। ओके सर। कितनी बार आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? कितनी बार, यहां पर देखो, कितनी बार आपको x0 आया, कितनी बार आपको x01 आया, कितनी बार आपको x2, ऐसा ही तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं? यस सर, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाँ, जैसे मैं इस बार इलेक्ट्रॉन को भेजा तो इस बार इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, फिर अगला बार भेजा तो यहां आ गया। सपोज 100 यहां आ गया, 80 यहां आ गया, 40 यहां आ गया, 30 यहां आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो Yes, उसका जब sir. आप प्लॉट करोगे तो ये ऐसा ही प्लॉट आपको नजर आ रहा है। यस सर। ओके, और सर अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को फोटोन के साथ करते हैं तो भी फोटोन कोई के साथ तो difference- बिल्कुल ही डिफ्रैक्शन पैटर्न देता ही है। वास्तव में बात फोटोन के साथ करने की तो है ही, इलेक्ट्रॉन के साथ भी वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। तो फोटोन वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न को तो हम कहीं ना कहीं वेव थ्योरी के थ्रू समझ ही लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि लाइट इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? यस सर। तो वहां पर तो हम इजिली समझ पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन वहां भी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर। ओके, मैं अभी आपको भेजता हूँ, वेट टिल 9 o'clock, मैं भेजता हूँ। अभी मेरी एक्चुअली एक क्लास और है, तो उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ। दैट इज वेरी नाइस वीडियो, है ना, चीजों को समझने के लिए। ओके, सो कल या परसों मैं देखता हूँ, कल या परसों वी विल फिनिश दिस थिंग एंड यू हैव वन टेस्ट ऑल्सो, de Broglie wavelength and Bohr-Sommerfeld theory and this uncertainty principle. Okay, so tomorrow we will use it mathematically इसको कैसे यूज करना सीखेंगे वो देखेंगे। आज तो हमने क्वालिटेटिवली इसको समझने की कोशिश की थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, ओके, चलो, थैंक यू। Thank you, sir.